Today will be a part on the classification of elements and periodicity in property. All the major trends and things that would come in NEET are covered in this part. So let's start. So the first things that I will cover is only the modern periodic law and the things in syllabus, not the history part. So let's start with the modern periodic law. According to modern periodic law, physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic numbers. And there are 7 periods which are horizontal and 18 vertical groups. तो 18 इसमें हो जाएंगे वर्टिकल ग्रुप्स जो कि ऐसे ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 तक, और 7 इसमें पीरियड हो जाएंगे। यूपीएससी ने 1A 1B टाइप का नेमिंग सिस्टम हटा दिया है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक वाइज कंपेरिजन एंड जर्नल ट्रेंड्स एंड जर्नल एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। NS1 ग्रुप 1 में और NS2 ग्रुप 2 में। चूंकि एस ब्लॉक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसके 2 ही ग्रुप हैं। फिर से सारे इस ब्लॉक के एलिमेंट्स रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इनका, और सारे इस ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, जैसा कि पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिट्स होते हैं तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 ग्रुप्स इसके हो जाते हैं। NH2 NP1 to 6, NP6 नोबल गैसेस के लिए है और NS1 to 5 बाकी के एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलॉइड, नॉन मेटल सभी प्रकार के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटेलॉइड्स एम्फीटोरिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 ND 1 to 10, NS0 to 2। ज़्यादातर इसके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट दोज विच आर ND10, N-1 D10, those were not considered transition elements but they are part of D block. They have variable valency, उनका वैलेंसी का एक रेंज होता है, जर्नल वैलेंसी नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का, एंड सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लगभग कलर्ड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन एरर मिल सकते हैं, NS1, NS0 और NS1। दीज आर 2 टाइप्स। सो NS1 के थर्ड 3D में 2 एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29। 4D में 3 एक्सेप्शंस हैं, और ये जो पैलेडियम है ये इकलौता S0 वाला एक्सेप्शन है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 5S0 4D10 डी ब्लॉक, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 4D सीरीज का है तो ऑफ कोर्स इसमें 4D10 ही होगा। NS1 वाले एक्सेप्शन जो कि 4D में है वो है NB 41, NO 42, RU 44, RH 45 and AG 47। Then there's 5D series। 5D series के errors हैं normal but only F0 element in the D block would be the lanthanum which is atomic number 57, it is important। 4F0, 5D1 and 6S2। NS1 के errors जो होते हैं वो होते हैं platinum and gold, 78 atomic number platinum and 79 atomic number gold। Now let's move on to F block। F block elements journal configuration is N-2 F1 से 14, N-1 D01 and NS2। Normally ND1 journal exceptions में भी होता है, एक थेलियम को छोड़कर जो कि एटॉमिक नंबर 90 है, जिसमें कि 5F0 होता है। डिस्पाइट बीइंग इन F block it have 0 in its 5F final cell। 5F0 62 and 6S2 it's important example। Then there's lectinoid series, cerium, gladium and Lu, atomic number 71 Lu, 64 GD and Ce 58। Then there's actinoid series, Pa 91, uranium 92, Np 93, Cm 96 and Lr which is lawrencium and it's 103, it's important example। Its configuration is 5F14, 61 and 7S2। Now let's move on to periodic trends। So the first trend would be atomic and ionic radii। Left to right it decreases due to increase in Z effective nuclear charge। Top to bottom it increases atomic size and ionic radii due to addition of new cells। If it's asked hydrated radii instead of ionic radii, then hydrated is reverse of these two, because water ions attract to the smaller atom, so the trend generally reverse।
top to bottom part. Now let's moving on to the isoelectronic species. Those species with same number of electrons in isoelectronic species were species with same number of electrons like O2 minus, F minus, Na plus and Mg2 plus. They are losing electrons and they are gaining electron, but number of electron is same in all of them. Then for rule of size, anions are generally larger, more negative electrons added, more negative size is greater. Then neutral species in middle and cation would be smaller size because they have lost electrons and more positive charge, more smaller size. Oxygen, fluorine, sodium and magnesium, this is the size depending on the charge of course. So let's move on to the next part, that would be ionization enthalpy, which is IE. Ionization enthalpy is energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Its general trend is increase across period left to right and decrease down the group top to bottom. लेफ्ट टू राइट जाने पर ये बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये कम होता है. इसके कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, कुछ एटम्स जंप्स कर जाते हैं आगे पीछे ड्यू टू हाफ एंड फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन वुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ हाफ filled 2p3 configuration and oxygen have not have it. If we compare IE2, then oxygen would be higher than nitrogen because after losing one electron, oxygen will now become 2p3 while nitrogen will be 2p2. Similarly, IE1 of barium and boron, as barium has fulfilled 2s2 configuration, so barium is greater and the trend would reverse in IE2 just like nitrogen and oxygen case. Next one would be the electron gain affinity or electron gain enthalpy. Both are same word, can be used. Its symbol is delta EGH. Energy change when electron is added to a gaseous atom. Its trend is increase across period. मतलब ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज गेन इंथैल्पी का अच्छा चीज़ है. तो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज टॉप टू बॉटम, लेस निगेटिव होता है और टॉप टू बॉटम में. इसके कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन. It is a classic example because fluorine is more electronegative but smaller size. फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होता है, इस वजह से लोन पेयर इंटरनल रिपल्सन हो जाता है और न्यू इलेक्ट्रॉन को वो रेजिस्ट करने लगते हैं. फिर दूसरा इसका एक्सेप्शन है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का जर्नली ऊपर वालों का ज़्यादा होता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का डिस्पाइट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हिज ग्रुप, it is of the least negative value in its group in terms of electron gain affinity or electron gain enthalpy. A special remark here, electron gain affinity of a element A minus would be equal to ionization energy of A because it would be losing one electron, it would be gaining one electron, overall would be equal, but in magnitude opposite sign but magnitude will be equal. Similarly, electron gain affinity of A plus would be equal to these two and ionization energy 2 of A minus would be equal to all of them, meaning all of them would be equal. Let's move on to the next trend. Next trend would be electronegativity. It is ability to attract share electron. Its trend is not present but based on experimental value, but generally increase across period left to right and decrease down the group top to bottom, and the values are based on Pauling scale. Its important data is fluorine have highest in the group about 4, then oxygen, nitrogen and chlorine nearly have same electronegativity, then boron, iodine, sulfur, carbon and hydrogen. Now let's move on to chemical periodicity. So diagonal relationship is the elements of second period show similarities to the third period in the next group. The second period element show similarity to third period element. This is known as diagonal relationship. Like lithium with magnesium, barium with aluminium and boron with silicon. All the examples are important here. Let's move on to the next trend. Anomalous behavior of second period elements like lithium, barium, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine behave differently from their whole group due to smaller size, higher electronegativity than their whole group and maximum covalency of 4 due to absence of d orbitals. Let's move on to the next trend. That would be nature of oxides. So metal oxides are basic in nature. They increase top to bottom like Na2O, MgO. Then acidic oxides are non-metal oxides.
their acidic character increase left to right, and basic character metal oxide was reaching top to bottom. This is left to right. Its example would be Cl2O7SO3, and there are third type and fourth type that are more important. The third one would be amphitoric oxide, which acts as both acid and sometimes base. Its example would be Al2O3ZNO, PbO, SNO, and BeO, aluminium, zinc, lead, and I don't remember the symbol, and barium. Neutral oxide is CO, carbon monoxide, NO, N2O, and H2O. So that would be all for this part. And one more thing, if you think about it, then metallic characters also affect the oxide nature. So metallic character increases left to right and decreases left to right and increases top to bottom, while non-metallic character would be its reverse. Non-metallic character increases left to right across period and decreases top to bottom below the group. So that would be all for the part of classification of elements and periodicity in property. It was the quickest recap possible of the chapter.